Good morning, student. Now, today we start some more example of chapter 5. और जो भी सम हम आज लेने जा रहे हैं वो अगले लेक्चर में जो मेथड आ गई उसी तरह के सम है। नई मेथड एक ही बाकी है और वो है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये सम हम सब कंप्लीट कर लेंगे, बाद में लास्ट में वो टॉपिक पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट आई टेक इलस्ट्रेशन नंबर 46, एग्जांपल 46, fx equal to sin x whole raised to sin x. Here we have to find f dash x. Condition is 0 less than x less than pi. See here base and power both term are in terms of x. Okay, then both are in terms of x. Okay, यहाँ पे दोनों वेरिएबल की टर्म में दिए गए हुए हैं sin x raised to sin x. Then we write fx equal to e raised to power, that means sin x into log base, that is log sin x. E raised to sin x log sin x. Now derivative of this term, derivative of fx, that is f dash x, and we know the derivative of e raised to x, that is e raised to x, then e raised to sin x into log sin x here into derivative of power. But in power there are total two terms, one sin x, second one is log sin x. Then here we use product rule. Okay, first derivative of sin x, that is cos x at that time, log sin x as it is, plus now sin x as it is and derivative of log function, derivative of log, that is 1 upon sin x into derivative of sin x, that is cos x. ओके, तो ये बहुत ही इजी होगा। e रेज़ टू sin x log sin x, उसकी जगह पे मैं लिख देता हूं sin x होल रेज़ टू sin x into bracket, see here cos x into log sin x plus here sin function cancel, then remaining term is cos x. From this bracket cos function is now common, then I write cos x into second term sin x whole raised to sin x into bracket log sin x plus 1. Why? Because cos function is common, then here log sin x plus 1. तो ये सम हमारा खत्म होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था। देख लीजिएगा, अब मैं अगला सम लेता हूं। मैं क्या लिखने वाला हूं खास देखिएगा। तो मैं यहां पे पहला लिख लेता हूं मोस्ट IMP रेज़ टू इंफिनिटी। ओके, बहुत ही ज्यादा अच्छा सम है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। तो खास देखिएगा, यहां पे फंक्शन दिया गया हुआ है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0. See here a, b and c. Okay, these three terms are constant term. Okay, a, b, c are constant. Here variable is only 2, that is x and y. Then here we have to prove that 1 plus dy upon dx whole square whole raised to 3 by upon d square y upon dx square is constant independent of a and b. मतलब हमको क्या प्रूव करना है? तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब उसका जो आंसर आएगा उसमें ए और बी की टर्म होने वाली नहीं है। तो हमको क्या प्रूफ करना है? 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर होल रेज़ टू 3 बाई अपन d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। देन फर्स्ट वी फाइंड dy बाई dx and then we have to find d square y by dx square, and then we put all this value in this term and then solve, and we find this term equal to constant. Okay, see here first I find dy by dx. Now I take function here x minus a whole square plus y minus b whole square equal to c square. Now derivative of this function with respect to x, then first term derivative of first term is 2 into x minus a into derivative of x, that is 1, and derivative of a, that is 0, constant term,
plus 2 times y minus b into derivative of y, that is dy by dx, and derivative of b, that is 0, and here derivative of c square, which is 0 because c square is constant. Now यहाँ पे dy by dx को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, तो 2 times x minus a opposite side, then negative 2y minus b into dy by dx, this term take opposite, then minus 2x minus a. From both sides 2 cancel, now y minus b taking denominator, then we get dy by dx equal to minus in numerator x minus a, denominator y minus b. Say this is result 1. Now I find second time derivative, that means I find d square y by dx square, and therefore d square y by dx square. Here we use quotient rule, okay, minus as it is, okay, यहाँ पे मैं quotient rule का यूज करूंगा, तो क्या आएगा, denominator as it is, that is y minus b as it is, into derivative of numerator, derivative of x, that is 1, and derivative of a, that is 0, minus now numerator x minus a as it is, into derivative of denominator, derivative of y, that is dy by dx, in minus derivative of b, that is 0, in denominator square, then y minus b whole square. Now I put the value of dy by dx. See here, minus as it is, in numerator y minus b minus x minus a, and value of dy by dx. See result number 1, dy by dx is equal to minus x minus a upon y minus b. Then I write here minus x minus a upon y minus b. In denominator as it is, that is y minus b whole square. Now I take LCM, minus multiply with minus, then plus y minus b, multiply with y minus b, then y minus b whole square, minus minus plus x minus a whole square, and from denominator y minus b multiply with y minus b whole square, then in denominator y minus b whole cube. See here, therefore d square y upon dx. Now I take LCM, then minus as it is here, y minus b whole square plus x minus a whole square, and in denominator y minus b whole cube. See here, in numerator x minus a whole square plus y minus b whole square, x minus a whole square plus y minus b whole square, that is c square. Then I write here minus c square upon y minus b whole cube. Say this is the result number 2. Then we get both value dy by dx and d square y by dx square. Now I start from here. See here. Now 1 plus dy by dx whole square, okay, whole raised to 3 by 2, in denominator d square y by dx square, and we prove that this term equal to some constant term which is independent of a and b. Now here I put value of dy by dx from result 1, and in denominator I put value of d square y upon dx square from result number 2, and here 1 plus dy by dx whole square. But we know that dy by dx, that is minus x minus a upon y minus b, and whole square, then I write x minus a whole square, in denominator y minus b whole square, and whole raised to 3 by 2. In denominator d square y upon dx square, that is minus c square upon y minus b whole cube. In numerator, first I take LCM, then y minus b whole square multiply with 1. See here, y minus b whole square multiply with 1 plus x minus a whole square, in denominator y minus b whole square, whole raised to 3 by 2. In denominator as it is minus c square upon y minus b whole cube.
Now see here equal to, see in numerator x minus a whole square plus y minus b whole square, that is c square. ओके, ये हमको दिया गया हुआ है x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर. तो यहां पे मैं रख देता हूं c स्क्वायर इन डिनोमिनेटर y माइनस b होल स्क्वायर एंड होल रेज़ टू 3 by in denominator as it is, that is minus c square upon y minus b whole cube. Now apply here power 3 by 2, then c square raised to 3 by 2, then these two will be cancelled, then remaining term is c cube. In denominator y minus b whole square raised to 3 by 2, then these two cancel, then in denominator we get y minus b whole cube. Now see in denominator as it is, that is minus c square upon y minus b whole cube. See here y minus b whole cube cancel. Now in numerator there is only one term, that is c cube. In denominator minus c square, then we get minus c. Okay, which is constant term, which is constant and independent of a and b, and independent of a and b. तो यहां पे हमको क्या आंसर मिला, माइनस सी. ओके, और माइनस सी क्या है, विच इज कांस्टेंट, और आंसर में ए और बी की टर्म नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी. खास याद रखिए मैंने लिखा है मोस्ट आईएमपी रेज़ टू इंफिनिटी. ओके, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है. तो ये सम आपको 2 बार लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है. ठीक है, now I take one more example of exercise 5, example number 16. I say this example is also IMP for 2 marks. Okay, IMP is to 500 and example is IMP for only 2 marks. लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा सम है 2 मार्क्स के लिए. बराबर है, स्टार्ट करते हैं. आंसर यहां पे क्या दिया है, cos y equal to x into cos a plus y, and then we have to prove that dy by dx equal to cos square a plus y upon sin a. तो यहां पे मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूं. Here function is given by cos y equal to x into cos a plus y. तो हमको यहां पे dy by dx फाइंड करना है. तो पहले हम क्या सोचेंगे कि y को सब्जेक्ट बनाएं, लेकिन y को सब्जेक्ट बनाना इतना आसान नहीं होगा इसमें. तो हम क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बना देते हैं. तो x इक्वल टू cos y cos a plus y इन डिनोमिनेटर, देन cos a plus y. नाउ आई फाइंड dx by dy. ओके, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन इनवर्स, एंड वी गेट dy by dx इक्वल टू दिस. Okay, now derivative of x with respect to y, then here dx by dy. See here I use quotient rule. Denominator as it is, then cos a plus y as it is. Derivative of numerator, that means derivative of cos function is minus sin y into derivative of y, which is 1, y derivative of y with respect to y, minus now numerator cos y as it is, and derivative of denominator, that means derivative of cos function is minus, then I write here plus sin a plus y, sin a plus y in denominator square, that means cos square a plus y. See here in numerator dx by dy. In numerator I write first term sin a plus y into cos y, sin a plus y into cos y, and second term that is minus cos a plus y into sin y. In denominator cos square a plus y as it is. See in numerator sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, which is formula of sin alpha minus beta. Here alpha as a plus y and beta as y. Then I use formula of sin alpha minus beta. Then in numerator
sin a plus y minus beta, that means minus y. In denominator cos square a plus y, that is dx by dy. See numerator. Now y cancel. Then in numerator only sin a, then we get dx by dy. Dx by dy equal to, in numerator only sin, in denominator cos square a plus y, then sin a upon cos square a plus y. Now I inverse this function, then we get our answer, our result. dy by dx, that is cos square a plus y upon sin a. तो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया है। अब अगला सम में लेता हूं, जो कि है 17 नंबर का एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज 5, एग्जांपल नंबर 17। क्या है? इफ x इक्वल टू a ब्रैकेट cos t प्लस t इंटू साइन t एंड y इक्वल टू a ब्रैकेट साइन t माइनस t इंटू कॉस t। तो हमको क्या फाइंड करना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी सम है। देख लो क्या करना है। पहले x इक्वल टू a ब्रैकेट cos t प्लस t इंटू साइन t। तो यहां पे ये दो फंक्शन दिए हैं, दोनों फंक्शन x और y t की टर्म में है। मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन है और यहाँ पे पैरामीटर है t। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? तो dx by dt, then we have to find dy by dt, and then we find dy by dx. Here first I find dx by dt equal to a. Now derivative of cos function, which is minus sin t, and here I use multiplication rule. First derivative of t, that is 1 at that time, second function sin t as it is, plus now t as it is, derivative sin function which is cos t. Then here sin function cancel, then here we get a into t into cos t, which is our dx by dt. Now I find dy by dt and y equal to a bracket sin t minus t into cos t। ऐसा ही एक सम, यही सम हम आगे कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने dy by dx ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। तो dy by dt यहाँ पे फाइंड करेंगे a as it is। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन which is cos t माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ t, that is 1 at that time cos t as it is, minus now t as it is, and derivative of cos function which is minus, then here plus sin t. See here minus cos plus cos, here we cancel, then our dy by dt is equal to a into t into sin t। तो यहाँ पे हमको dy by dt भी मिल गया, dx by dt भी मिल गया। अब हम आगे बात करेंगे, तो हम आगे क्या फाइंड करेंगे? dy by dx। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा dy by dx। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा dy by dt, that is in numerator a into t into sin t, and in denominator dx by dt, that is a into t into cos t। a t both term are cancelled, sin upon cos, that is tan t। okay, that is tan t। तो dy by dx हमको मिल गया tan t। अब हमको क्या फाइंड करना है? d square y by dx square, that means I take derivative of this function with respect to x, then here we get d square y upon dx square। see here again derivative of function with respect to x, then d by dx of tan t। okay, d by dx of tan t, that means derivative of tan function, we know that derivative of tan function which is sec square t into derivative of t with respect to x, that is dt by dx, then here sec square t as it is, and dt by dx which is inverse of dx by dt, then I write a into t into cos t in denominator, then 1 upon a into t into cos t। now cos t I take in numerator, then cos convert into sec function, then in numerator
sec cube t upon at which is our final answer। ये स्टेप पे खास ध्यान रखिएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan t with respect to variable x, then derivative of tan function first, that is sec square t into by chain rule derivative of t with respect to x, that is dt by dx। अब हम अगला सम लेंगे जो कि एक्सरसाइज नंबर 5 का एग्जांपल नंबर 23, वो भी बहुत ही आईएमपी सम है। देख लीजिएगा 23 ऑफ एक्सरसाइज 5 क्या है इसमें। इफ y इक्वल टू e रेज टू a cos इनवर्स x, ये फंक्शन दिया गया हुआ है और कंडीशन है -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, then we have to show that 1 minus x square into d square y upon dx square minus x into dy by dx, x into dy by dx minus a square y इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा सम है, इसको भी मैं लिख लेता हूं IMP। ओके, तो आज के लेक्चर में बहुत सारे IMP सम आए, तो आज का लेक्चर का नाम है IMP लेक्चर। ओके, इसमें सारे सम बहुत ही ज्यादा अच्छे जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू e रेज टू a cos इनवर्स x, ये फंक्शन हमको दिया गया हुआ है और हमको क्या प्रूव करना है। 1 minus x square into d square y upon dx square minus x into dy by dx minus a square into y equal to 0। मैं स्टार्ट करता हूं y equal to e raised to a cos inverse x, then first derivative of this function with respect to x, that is dy by dx, and derivative of e raised to x, that is e raised to x into derivative of power। See here, power is a into cos inverse x, then a as it is, and we know that derivative of cos inverse, that is minus 1 upon under root 1 minus x। Now root 1 minus x square multiply with dy by dx, then we get under root 1 minus x square into dy by dx equal to, see here, minus a, and now I put e raised to a cos inverse x equal to y। ओके, तो यहां पे हमको क्या चाहिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन आई टेक स्क्वायर बोथ साइड, देन हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy बाय dx होल स्क्वायर, एंड ऑपोजिट साइड माइनस a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, then now first term 1 minus x square as it is, now I take derivative of dy by dx with respect to x, then 2, now in coefficient 1 power less, then 2 into dy by dx। now again derivative of dy by dx with respect to x, then we get d square y by dx square। okay, यहाँ पे मैंने यूज किया है चेन रूल का। now plus dy by dx whole square now as it is, and derivative of this first bracket, derivative of 1, that is 0, and derivative of minus x square, that is minus 2x into dy by dx whole square। now opposite side a square as it is, derivative of y square, that is 2 into y into derivative of y, which is dy by dx। now see here, from both sides 2 common and cancel, one more term which is dy by dx is also common and cancel, then 2 times dy by dx is common and cancel, then we get 1 minus x square into 2 into dy by dx already common and cancel, then 2d square y upon dx square। now second term, that is minus 2 common and cancel, then remaining term is x, and 1 time dy by dx equal to, here a square 2 into dy by dx which is common and cancel, then a square into y। now a square into y, take this side, then we get our result 1 minus x square into d square y by dx square minus x into dy by dx minus a square y equal to 0, which is our final result। ये सम बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ आज का लेक्चर में जो भी हम पढ़े
वो सारे सम 2 बार लिखो और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो। ओके, सारे सम 2 बार लिखना है, खास याद रखेगा, ठीक है।